Welcome to Seldom India classes. Please don't forget to like, share and subscribe. Today's topic is number systems. Firstly, we will see how many type of numbers exist. तो सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 and infinite. राइट. होल नंबर्स नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, वो हो जाएंगे होल नंबर्स. राइट. इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर दो टाइप के होते हैं. इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. राइट. +1, +2, +3, -1, -2, -3. Right. Non-integers numbers like 3√2 या 3√3, 4√5 etc. इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं नॉन इंटीजर नंबर्स. प्राइम नंबर्स जिनके और फैक्टर्स नहीं होते, वो खुद की टेबल में या फिर 1 की टेबल में ही आते हैं, वो होते हैं 2, 5, 7, 11 etc. राइट. को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो दो प्राइम नंबर्स में ही फैक्टराइज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 7 करेंगे हम, तो 5 इंटू 7 क्या होता है? 35. 35 इज अ co-prime number. I'm sorry, I forgot 3 here. Right? Composite numbers वो numbers होते हैं जो किन्हीं दो छोटे integers को मिलाकर बने हैं. For example, 2 into 7, 14 और 5 into 2, 10. They can be factorized into two smaller positive integers. They are composite numbers. Last is odd and even numbers. Even numbers are those who are divisible by 2, and odd numbers are 1, 3, 5, 7, not divisible by 2. How to calculate HCF of any two numbers? Highest common factor, it is also called GCD, greatest common divisor, or GCM, greatest common measure. For example, we have two numbers 16 and 40. Right? इसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 का करेंगे तो 2 into 2 into 2 into 2, 4 4 16, and 40 का 2 into 2 into 2 into 5. So इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है. 3 2 दोनों जगह कॉमन है. That is the HCF of 16 and लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दो नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो, जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 12 है हमारे पास, इसका एलसीएम निकालना है. तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं. 4 और 6. वापस ये 2 से हो सकते हैं, 2 और 3. राइट. फिर ये 2 से करेंगे, 3 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, 2 बन जाएगा 1. ठीक है. अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1. वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. ओके. नाउ मल्टीप्लाई these numbers. These numbers will give you the LCM, that is 24. Let's see this question. This question says a cube b equals to abc equals to 180. Find the value of c such that a, b, c are integers. Now many of the students don't
look at this condition or pay attention to this condition. This is very important. Now see how we will use it. We have a cube b equals to 180, right? Now see 180 के फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें एक a 3 बार आ जाए और b 1 बार आए, ठीक है? 180 को फैक्टराइज करते हैं. 90 to 45, 45 5 और 3 से करते हैं. सबसे पहले 3 1 और 5 15, अगेन 3 5 ये 1, राइट? सो इसके फैक्टर्स हुए 2 into 2 into 3 into 3 into 5. इसमें क्या आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो 3 बार आ रहा है? नहीं. और हमारे पास कंडीशन भी है कि वो इंटीजर्स है, तो ये कोई रूट में तो आंसर हो नहीं सकता, राइट? सो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 3 बार आता हो 180 के फैक्टराइजेशन में. सो वो नंबर क्या होगा? 1. हम ऐड करेंगे इसमें 1 into 1 into 1, ये बन जाएगा हमारा a और ये बाकी हो जाएगा d. सो a equals to 1 and b equals to 180. Now using the second equation, putting a equals to 1, b equals to 180 and c equals to 180. 180 180 cancel and c equals to 1 is the answer. Okay. HCF of fraction is given by HCF of numerator divided by LCM of denominator. LCM of fraction is given by LCM of numerator divided by HCF of denominator. For example, we have two fractions 1 by 2 and 3 by 4. We have to calculate HCF of that. तो HCF of numerator 1 and 3 का HCF क्या है? 1. LCM of denominator 2 and 4 का LCM क्या है? 4. Right? So 1 by 4 is HCF of 1 by 2, 3 by 4. And now LCM of this fraction, LCM of 1 and 3 is 3. And HCF of denominator 2 and 4, 2 and 4 is 2. Right? So we get 1 by 4 and 3 by 2. This number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How we will do it fast? Let's see. It is an even number, so it is divisible by 2. Right? Second, if it is divisible by 3, then what we have to do is in सब digits का sum निकालेंगे. अगर वो sum divisible है 3 से, तो ये नंबर भी divisible होगा. तो sum क्या है? 2 plus 3 plus 7 plus 4 plus 9 plus 5 plus 2 plus 4 plus 8. Okay, 2 plus 3 5, 5 plus 7 12, 12 plus 4 16, 16 plus 9 is 25, 25 30, 32, 32 and 4 36, and 36 plus 8 is 44. 44 is not divisible by 3. So this number is not divisible by 3. Now third comes 4. For 4 we have to check if last two digits are divisible by 4 or not. Last two digits are 48, right? 48 is clearly divisible by 4. So this number is divisible by 4. See. Next is 5. Right? For divisible, for a number to be divisible by 5, it should have either 0 at the end or 5 at the end. This number doesn't have both of the things, so it's not divisible by 5. Next is 6. For checking the divisibility with 6,
the number should be even, right? It should be even, and second, it should be divisible by 3. This number was not divisible by 3. It is even but not divisible by 3. So not divisible by 6. Next is 8. For checking a number to be divisible by 8, last 3 digits should be divisible by 8. 2, 4, 8 divided by 8 gives us 31, which shows that it is divisible by 8. Right? Next is 9. For checking divisibility with 9, the sum of numbers should be divisible by 9. It was 44, sum of digits was 44, and it's not divisible by 9, so not divisible by 9. Next is 10. For 10, it should have the unit place to be 0, which is not there, so it's not divisible by 10. Now, divisibility by 11, if a number is divisible by 11, then the sum of digits at odd places minus the sum of digits at even places should be either 0 or 11. So let's see the sum. 2 plus 7 plus 9 plus 2 plus 8, which is 28, and sum of digits at even places 3 plus 4 plus 5 plus 4 again, which is 16. Subtracting both, we get 2 and 1, 12. This is not 0 or divisible by 11. 12 is not 0 and not divisible by 11, so this number is not divisible by 11.